बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू पीपल? Today we learn how to format our application, which is Apex 20.1 and it is part 10. आज हम अपनी एप्लीकेशन का 10वां हिस्से पे काम करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आइकन है, इस आइकन को हम चेंज कर देंगे। So in this video we will change this login icon. Okay, so first go to shared components। सबसे पहले हम shared components में जाएंगे। hit static application files option and static file। अब हम static application files के अंदर जाएंगे जो कि फाइल्स की हेडिंग में आता है। Now hit upload file button। अब हम अपलोड फाइल के बटन को एक ज़र्फ लगाएंगे, ठीक है। हिट चूज फाइल ऑप्शन। चूज फाइल्स के बटन को या ऑप्शन को क्लिक करें एंड सेलेक्ट योर डिजायर्ड फाइल और अपनी मतलूबा इमेज को सेलेक्ट कर लें। नाउ हिट अपलोड बटन और आप अपलोड बटन को दबा दीजिए। नाउ कम टू लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज पे आ जाए। इसी पे क्लिक रहने दीजिए। होल्ड ऑन, कीप क्लिक ऑन दिस। स्क्रॉल डाउन, नीचे आइए।
scroll down and come to CSS, तो inline area under CSS, नीचे आते रहिए और inline वाली जगह पे पहुंचिए जो कि CSS की हेडिंग के अंडर है, और ये मतलूबा कोड इस पर कर दीजिए. Now copy and paste that code. However, we just do not change the icon only, we change the format of the login page as well. सिर्फ हम आइकन ही चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा लॉगिन का तरीका भी, थोड़ा सा लॉगिन का वो भी चेंज कर देंगे. Now Alt F8 and reflect the changes. Alt F8 दबाएं और changes दिखें. This is the icon and this is how now it looks like. This is its default design, silver color. ये इसका default design था silver color. So we are going to change it. Select Marquee from page template drop down, I believe. From page template drop down. आप Marquee ऑप्शन सेलेक्ट कर लें पेज टेम्पलेट वाले ड्रॉप डाउन में से, जो कि अपीयरेंस के अंडर में है, और आप इसको चला के देखें कैसा लगता है. तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. आप इसको चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज इट और सेलेक्ट अदर ऑप्शन एज वेल, लेफ्ट साइड कॉलम एज वेल. But my choice is Marquee. Thank you very much. However, in the next video I am going to change this text or this text, Apex 20.1. If you have any better idea, so you can comment on me, so I will do the changes according to your opinion. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullah.